Read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you. यानी आप जब मॉडल रीडिंग कर रहे होंगे टेक्स्ट की, तो फिर बच्चों को आप पहले बताएंगे कि बच्चों मैं ये टेक्स्ट पढ़ने लगा हूँ या लगी हूँ, आपने मेरे साथ साथ खामोशी से किताब पर पढ़ना है, खामोशी के साथ, बगैर बोले और गौर से सुनना है। ये आपने इंस्ट्रक्शन देनी है बच्चों को। Well, now I'm going to read it for you. Caterpillar's shoe. अच्छा, यहाँ मैं ऑनरेबल टीचर एक और बात बता, मैं मॉडल इस सिलसिले में मॉडल रीडिंग में नहीं दावा करता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, लेकिन ख्याल है कि मैं ठीक ही पढ़ता हूँ। तो अब इसमें आपके लिए मैं इसलिए पढ़ता हूँ, ये मैं एक ही दफ़ा बात कर रहा हूँ, इसके बाद नहीं करूँगा। ये मैं आपके लिए इसलिए पढ़ता हूँ कि आप दो बातें नोट कर सकें, एक लफ्ज़ों का प्रोनाउंसिएशन और दूसरा जिसको कहते हैं इंटोनेशन, INTONATION। मैं दोबारा स्पेलिंग बता देता हूँ, INTONATION। इंटोनेशन, इंटोनेशन का मतलब है कि उतार चढ़ाव, कहाँ आहिस्ता बोलना है, कहाँ वक्फा देना है, कहाँ रुकना है, कहाँ वॉल्यूम तेज करना है, ये चीजें आप नोट करके तो बच्चों तक मुंतकिल कर सकें। Once a caterpillar lost her shoe. It hurt her to walk without it. Caterpillar went to a spider. May I borrow your shoe? But the spider's shoe was too small. She went to a frog. May I borrow your shoe? But the frog's shoe was too big. She went to a grasshopper. May I borrow your shoe? But the grasshopper's shoe was scratchy. Now the caterpillar was too tired. She curled up on a leaf to rest and made a cocoon to sleep in. After some days, she changed into a butterfly. She did not need shoes anymore. She could fly, walk without it. Caterpillar went to a spider. May I borrow your shoe? But the spider's shoe was too small. She went to a frog. May I borrow your shoe? But the frog's shoe was too big. She went to a grasshopper. May I borrow your shoe? But the grasshopper's shoe was scratchy. Now the caterpillar was too tired. She curled up on a leaf to rest and made a cocoon to sleep in. After some days, she changed into a butterfly. She did not need shoes anymore. She could fly.